students, welcome to GKRP online classes. Today I am here with your exercise 7.4 of chapter number 7. Okay, so let's open your book, page number 118, exercise 7.4. Okay, now come to your question number 1. Add the following set of fraction. If required, write the fraction in the lowest form. Okay, so here we have to add the fraction. ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन दिए हैं, इसको हम ऐड करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़े तो कोई भी फ्रैक्शन को हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाकर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर 1 ए नंबर, इन दिस नंबर 2/20 प्लस 5/10। ओके, कुछ इस तरह से है आपका ये फ्रैक्शन। तो देखो ये सारे नंबर्स को हम लोएस्ट फॉर्म में, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये एक टेबल में है कि नहीं, ये देखो 2 और 20 जो है एक ही टेबल में है, तो चलो इसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में इसका लाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 10 जा 20 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, सेम करना है। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या किया हम 20 में 20 को 10 में कन्वर्ट किया, 2 से कट किया, 2 1 जा 2 2 10 जा 20 हो गया, प्लस 5/10। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, सेम कर दिया। नाउ एट दिस नंबर राइट द डिनोमिनेटर बिलो। नाउ 1 plus 5। ओके, सो 1 plus 5 is your 6/10। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, और कुछ नंबर्स करने हैं। बी नंबर, here the fraction of 6/10 plus 5/10. So in this case here the denominators are already equal. तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा लोएस्ट फॉर्म में, डायरेक्ट you have to add this number. 10 not adding here, 6 plus 5 11/10. Okay, now come to your C number, 3/5 plus 2/5. In this case also the denominator are equal, so directly add 3 plus 2/5. It's 3 plus 2 5/5। देखो यहाँ पर हो गया इक्वल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाने से उसका वैल्यू क्या होता है 1। ये 5 1 जा 5 5 1 जा 5 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट कम टू योर डी नंबर, 1/7 plus 6/14। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 1/7 ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस 6/14 को अगर हम 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 से कट करने से 2 3 जा 6 हो गया, नेक्स्ट 2 7 जा 14, तो इसके लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखो आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। नाउ एड दिस नंबर 1 plus 3/7 is equal to 1 plus 3 4/7. This is your answer. Okay, now come to your E number, 3/15 plus 4/5. Okay, 3/15 plus 4/5 है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, जो बड़ा डिनोमिनेटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। ओके, E number 3/15 plus 4/5. Now convert this fraction into lowest form. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15 प्लस 4/5। अब देखो आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। Now 1 plus 4/5. So 1 plus 4 is your 5/5 again. इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर 1। न्यूमरेटर, if the numerator and denominator are equal, then the value of that fraction is what, 1. Next come your F number, 4/8 plus 5/8। यहाँ पर देखो आपका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 4 plus 5/8।
by 20. Okay. Next C number 4 by 6 minus 2 by 6. Okay. So 4 minus 2 by 6. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है और 4 minus 2 is your 2 by 6. Okay. तो यहाँ पे देखो 2 by 6 है बट इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, because these two numbers are coming in your table number 2. So you can easily cut this 2 number by 2. अगर 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2. Okay, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 1 by 3. Now come to your D number 8 by 5 minus 3 by 5. Here also your denominator are equal. So direct minus 8 by 3 by 5. So 8 minus 3 is your 5 by 5. Okay, so यहाँ पे देखो denominator numerator equal हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा? 1. Okay, now come to your E number. In this number the fraction are 7 by 9 minus 1 by 9. So for subtract this 7 minus 1 by 9. So 7 minus 1 is your 6 by 9. Okay. Now look for these two numbers. These two numbers are coming in your table number 3. So cut this both number by 3. 3 2 ja 6. 3 3 ja 9. So your answer is 2 by 3. Okay. Now come to your F number 6 by 8 minus 5 by 8. So 6 minus 5 by 8 is equal to 6 minus 5 is equal to your 1 by 8. Now come to your G number. Fraction are 16 by 24 minus 3 by 12. ओके, तो यहाँ पर देखो आपका डिनोमिनेटर जो है और इक्वल है, सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला डिनोमिनेटर को छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट. 24 है तो हम कौन सा नंबर से कट करने से ये 12 होगा? 2 से कट करने से 12 होता है. सॉरी, यस 12 होगा क्योंकि 2 12 into 2 24 होता है. तो चलो हम ये दोनों नंबर को 2 से कट करेंगे. 2 से कट करने से हो जाएगा 2 8 जा 16 by 2 से अगर कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया minus 3 by 12. Now subtract this. 8 minus 3 by 12. Okay, is equal to 8 minus 3 is your 5 by 12. Okay, now come to your H number, last one. 10 by 18 minus 1 by 9. So you have to convert this 18 into 9. So let's write the lowest form of this fraction. अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये 9 होगा और ये हो जाएगा 5. 2 5 जा 10 होता है और 2 9 जा 18 minus 1 by 9. Now subtract this. 5 minus 1 by 9 is equal to 5 minus 1 4 by 9. This is your required answer. Okay students, तो इसी तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन को इजीली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो. ये था आपका प्रोसेस. किस तरह से आप सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो आप कैसे एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंट रहने से हमें क्या करना पड़ता है? बड़ा वाला फ्रैक्शन जो होता है उसका हमें क्या करना पड़ता है? लोएस्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एडिशन. ओके, नेक्स्ट वी विल डू योर नंबर 3. ओके, so your question number 3 is what? Solve the following word problems in your notebook. Okay, so here some word problems are given and we have to solve this. Okay, now come to your A number first. In A number, the question is what? I bought 2
1 liter. So कितना लीटर हुआ? 1 liter. Okay, this is your answer. Now come to your B number. My recipe requires 2 by 3 cups of wheat flour. Okay, यहाँ पर एक रेसिपी बनाने के लिए कितने फ्लोर की जरूरत पड़ रही है? सॉरी, व्हाइट फ्लोर। व्हाइट फ्लोर की कितने जरूरत पड़ रहे हैं? 2 by 3 cups. Next 1 by 3 cup of whole wheat flour and wheat flour की कितनी जरूरत पड़ रही है? 1 by 3 cup. Then how much flour do I need in all? Okay, तो यहाँ पर देखो एक रेसिपी बनाने के लिए 2 by 3 cup of white flour and 1 by 3 cup of wheat flour. White and wheat डिफरेंट है, तो ये दोनों चीज हमें जरूरत पड़ रही है रेसिपी बनाने के लिए। तो टोटल कितने फ्लोर की जरूरत पड़ रही है? तो हम यहाँ पे टोटल बोलेंगे हैं, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ओके, okay, so in B number, first write down recipe required. My recipe required white flour is equal to how much? 2 by 3 cup. Next, wheat flour is equal to 1 by 3 cup. Okay, now write the how much flour do I need in all? Flour needed in all flour I need in all means total is equal to 2 by 3 plus 1 by 3. So यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, so 2 plus 1 by 3 is equal to 2 plus 1 3 by 3. तो कितना हुआ? 1 कप. तो टोटल इसको कितने फ्लोर की जरूरत पड़ रही है? दोनों को मिला के 1 कप. ओके, नाउ कम टू योर C number. My dog is 5.5 years old. My dog is 5.5 years old and my cat is 4.5 years younger than my dog. तो यहाँ पे younger than बोला गया है डॉग से। डॉग से जो है कैट बड़ा है, उसका एज ज्यादा है, और डॉग जो है छोटा है। How much year he has younger? 4.5 years younger than cat. Okay, तो 5.5 है डॉग का एज। ओके, तो कैट का एज कितना होगा? 5.5 plus 4.5. Then how old is my cat? Okay, so let's do your C number. First write down my dog is 5.5 years old. Next, my cat is 4.5 years younger. Younger than my dog.
ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 10 जा 20, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 years. So the age of the cat is what 10 years. Okay, this is your required answer. Now come to your D number. In D number, your question is a recipe needs 3 by 4 teaspoon of black pepper and only 1 by 4 teaspoon of black pepper is available. ओके, तो एक रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास कितने ब्लैक पेपर की जरूरत है 3 by 4 टीस्पून, बट 1 by 4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर इज अवेलेबल. कम है, जितना हमको चाहिए उतना अमाउंट का ब्लैक पेपर नहीं है. ओके, देन हाउ मच मोर ब्लैक पेपर डज द रेसिपी नीड. देखो 3 by 4 ब्लैक पेपर हमें चाहिए, तो उसमें से 1 by 4 ब्लैक पेपर हमारे पास है, और कितने चाहिए, तो क्या करेंगे 3 by 4 minus 1 by 4. जैसे कि हमारे पास हमें 5 पेन्स की जरूरत है, पेन. ओके, 5 पेन्स की जरूरत है, बट हमारे पास 2 पेन अवेलेबल है, तो हमें और कितने पेन चाहिए 5 पेन रखने के लिए 3 पेन की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे 5 minus 2 कर दिए, तो 3 पेन हमें मिल गए, और खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं. तो इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे माइनस. Okay, so first write down a recipe needs black pepper is equal to 3 by 4 teaspoon. Next, black pepper available is available.
5 minus 2 is equal to 3 by 3. So 3 by 3 is equal to 1. ये हो गया आपका 1. This is your answer. और 1 here. Okay. Now come to your F number. Joy lives 3 by 8 miles from the Science Museum. Joy जो होता है आपका क्या बोलते हैं उसका डियर का बेबी को जॉय बोलते हैं. जॉय लिव्स 3 by 8 माइल फ्रॉम द साइंस म्यूजियम. एक साइंस म्यूजियम है, वहां से 3 by 8 माइल डिस्टेंस में रहता है. नेक्स्ट सिया लिव्स, सॉरी जॉय यहाँ पे एक पर्सन को बोला गया है. नेक्स्ट सिया लिव्स 1 by 8 miles from the science museum in the opposite direction. Then how much closer is Sia from the place where Joy lives? Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? Joy कितने पास में है Joy और Sia का हाउस को हमें फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पर एक म्यूजियम है. कंसीडर करते हैं हम ये एक म्यूजियम है और जॉय का हाउस इधर है. ये कोई भी डायरेक्शन कंसीडर करो. जॉय इधर हो गया, सिया ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो जॉय डिस्टेंस फ्रॉम म्यूजियम टू जॉय हाउस इज 3 by 8 mile. Okay, and distance from museum to Sia's house is 1 by 8 miles. Your question is what? How much closer is Sia from the place where Joy lives? तो देखो Sia क्या कर रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 by 8 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 by 8. तो दोनों का अगर ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आएगा कि नहीं. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एडिशन. ओके, सो लेट्स डू योर नंबर F. First write down Joy lives 3 by 8 miles from the museum. Next, Sia lives 1 by 8 miles from the museum. Okay, now write the total distance. Or Sia, how much closer is Sia from the place where Joy lives? So write here the distance from Sia to Joy, sorry, from Sia to where Joy lives. Okay, so Sia से लेकर Joy जहाँ पे रहता है वहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो राइट हियर प्लस करना है. सो 3 by 8 plus 1 by 8. So 3 plus 1 by 8. So 3 plus 1 4 by 8. अगर हम इसको 4 से कट करेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो कितना हो गया 1 by 2 और हाफ माइल्स. ये था आपका आंसर. हाफ माइल्स डिस्टेंस है सिया और जॉय का घर का डिस्टेंस. Okay, now come to your G number. At my birthday party, the girls at 3
boys and girls is equal to, you have to add both the numbers, 7 and half plus 3 and half. So first convert this mixed fraction into improper fraction. 7 into 2, 14. 2 into 7, 14. 14 and 1, 15. 15 by 2 plus 2 into 3, 6. 6 and 1, 7. 7 by 2. So add this number, 15 plus 7 by 2. So 15 plus 7 is your 22 by 2. इसको हम 2 से कट कर देते हैं. 2 under 2, 2 under 2. So your answer is what? 11. और right है 11 pages. So total कितने pieces है? 11 pages. Okay? Come to your number 4. तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन है सॉल्व गिवन प्रॉब्लम्स. यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमें कैसे सॉल्व, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. 1 by 14 plus 3 by 14 plus 5 by 14. Okay, so in this case first you have to solve the bracket. Bracket में जो होता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट बार जो होता है ब्रैकेट के उसको बाद में ऐड करेंगे. Okay, so let's do your a number 1 by 14 plus ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 by 5, 3 plus 5 by 14. Okay, now 1 by 14 plus 3 plus 5, 8 by 14. Now add this number, 1 plus 8 by 14. So 9 by 14. This is your answer. Okay. Now come to your B number. 16 by 17 minus 13 by 17 minus 4 by 7. Okay. In this case also bracket is given. So first solve the bracket. 16 by 17 minus bracket पे इसको minus करेंगे 13 minus 4 by 17. Okay. So subtract this 16 by 17 minus 13 minus 4 is your 9 by 17. Now subtract this 16 minus 9 by 17. So 16 minus 9 is your 7 by 17. Okay. Now come to your C number. यहाँ पर देखो 1 by 21 सेम नंबर देंगे. 1 by 21 plus 1 by 21 plus 1 by 21. This is your C number. 4 numbers दिए गए सेम नंबर, तो हम क्या करेंगे, सारे न्यूमरेटर को बस प्लस करना है. 1 plus 1 plus 1 plus 1 by 21. So 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 by 21. Okay, next come to your D number. D number also same. 3 by 35 plus 2 by 35 plus 2 by 35. So add all the numerator first. 3 plus 2 plus 2 by 35. Okay, so 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 by 35. But these two numbers are coming in your table number 7. So cut this with 7. 7 1 is 7, 7 5 is 45. So 1 by 5. Okay. Now come here. E number. In E number, the fraction of 12 by 30 minus 6 by 30 minus 5 by 30. Okay. Is equal to 12 by 30 minus 6 minus 5 को पहले करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है. Okay. So 12 by 30 minus 6 minus 5 is your 1 by 30. So 12 minus 1 by 30 is equal to 12 minus 1, 11 by 30. Okay. Now come to your F number. In F number, the fraction are here 12 by
ब्रैकेट जो है ब्रैकेट में जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 5 माइनस 27 ब्रैकेट प्लस 1 बाय 27। ओके, सो 12 माइनस 5 इज योर 7 by 27 plus 1 by 27. Now add this number 7 plus 1 by 27. So 7 plus 1 8 by 27. Okay, this is your answer. Next come to your G number. In G number the fraction are 12 by 7 plus 18 by 7 minus 13 by 7. Okay, so first solve the bracket. 12 by 7 came plus 18 minus 13 by 7. Okay, so 12 by 7 plus 18 minus 13 is your 5 by 7. So 12 plus 5 by 7. So 12 plus 5 is your 17 by 7. Okay. Now come to your last one, H number. 3 by 9 plus 6 by 9 minus 4 by 9 minus 3 by 9. ओके, तो यहाँ पर देखो 2 सब्ट्रैक्शन दिए हैं, 1 एडिशन दिए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे। फर्स्ट एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, सो इसको हम ऐड कर देते हैं पहले ये दोनों को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3 plus 6 by 9 हो गया minus 4 by 9 minus 3 by 9. Okay, now add this number. 3 plus 6 is your 9 by 9 minus 4 by 9 minus 3 by 9. Okay, now subtract this all number. हम 9 लिख देते हैं यहाँ पे. It's 9 minus 4 minus 3. So 9 minus 4 is your 5 minus 3 बच गया by 9. It's 5 minus 3 is your 2. तो यहाँ पे हो गया 2, नीचे 9. So last one. आंसर इज 1 2 by 9. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे आपका नंबर 4 कंप्लीट हो गया एंड एक्सरसाइज 7.4 ऑफ योर चैप्टर नंबर 7 के ओवरऑल आपका चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइजेस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।